Hello everyone, welcome to another session of Lex Dialogues. Aji ame start kariba ei session ta from the previous context. Last session re amane padile like ethics of our judiciary our legal process. So advocates manankar tendencies kon hoba katha, behaviors kon hoba katha seta ame kichita discuss korthile and seuthu aji ame continue kariba about the seventh lamp of advocacy, the framework or the guidelines or the basic structure behind all judicial things, legal process and justice. So let's begin. So who to start kariba? ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ସେସନରେ କଥା ହେଲେ seven lamps ନାଇଁ ସେଭେନ ଲ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ହେଲେ ଗୋଟେ ମୋରାଲ ଗୋଟେ ଆଡଭୋକେସିର like ethics in all aspect of life, how ethics used in a moral and professional ethics life. ଆମେ ବେସିକାଲି ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲେ how moral and ethics is connected and how ethics is like reflected or been followed in all aspect of judicial system. ଆଜି ସେଠୁ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା about the seventh lamp of advocacy. Seven lamps of So why seventh lamp and what are those seventh lamps? Seven lamps are there. So why it's connected with lamps? Like is it real lamps or like why seventh lamp and what are those? I'll to address that one. Like lamps, it is not like real lamps, means not physical lamp, but latter point of ideal lamps means what a like dipota jo lamp ta it always shows light. जोटा कि तमर गोटे बृहद उपनिषद रे गोटे अछि आमे जानि परिबा असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतगमय ओम शांति तो सार मीनिंग कॉन्टेक्स्ट होची जी हमको अंधकार रु आलोक आडू को नेकी जाय हु विल गिव अस लाइट नॉट लाइक जे रातिर अंधकार रु जीवनर अंधकार रु मध्य जी हमको गोटे आमे जो आजिकली लाइफ रे आपण देखुथिबे चारियाडे लोक माने फॉल्स एट्रिब्यूट को फॉलो करूछंती चेज करूछंती तापरे भांगी पडछंती बट इन द एस्पेक्ट जदी जोटा हमको ज्ञान एक्चुअली दिए जोटा गुरु रूप रे आसे सेटा गोटे आलोक लाइट आसे रे ऑफ होप जोटा कहंती से हमको कोन गोटे नेगेटिव पाथ थ्रू हो कि नेगेटिव लोकन ठू हो कि गोटे नेगेटिव एटमॉस्फियर एनवायरनमेंट रु हमको गोटे पॉजिटिविटी आडू को नै जाय सेटा होची लैंप आपन रात रे अंधकार रे जाउथिबे तो दीज आर लाइक द सेवन लैंप्स व्हिच इज गिवन बाय सर अबाउट पेरी तो सी गोटे ब्रिटिश रो जने बहुत एस्टैब्लिश लॉ मेकर्स थिले कि सॉरी जज थिले तो सी जो सेवन लैंप्स ता देथिले टू शो हाउ ए एडवोकेट शुड ऐड ऑन वैल्यू टू हिज क्लाइंट हाउ ए जुडिशियल ऑफिसर ऐड ऑन वैल्यू टू द लाइफ ऑफ द पीपल जोटा कि सेमान को अंधकार रु आलोक आडू को नेकी जाई परिबो माने गोटे राइट एटीट्यूड शो करूची एई सब सेवन लैंप्स रहबा दोज आर एथिकल वैल्यूज लाइक नॉर्मेटिव वैल्यूज जोटा आपन को लाइफ टा भी वर्चुअस करेबो प्लस सामना लोकटा को भी आपन गोटे ट्रस्ट ऑफ गेन ये करि परिबे तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द लाइक सेवन लैंप्स तो कॉन्टेक्स्ट हमें बुझी पाले जे कोन भाई सेवन लैंप्स देले तो दीज आर वेरी ब्यूटीफुल कॉन्टेक्स्ट ता पई गोटे भलो निमोनिक्स भी मु बनै जी जोटा हमर माने सातटा जो वर्च्यूज अछि सेटा को पिला माने सहज रे मन रखि परिबे समस्त मन रखि परिबे जोटा इजी हबो तांको ये करे बिकॉज़ सडनली सातटा वर्च्यूज मन रखिबा सहज न इजी नो तो ताको चलो हम बुझिबा गोटे लेट्स डू फर्स्ट कि हमें सातटा लैंप कोन आगो सेटा कहि दबा देन वी विल गो टू द निमोनिक्स ओके डेफिनेटली व्हाट आर दोस सेवन लैंप्स तो like seven lamps are like first lamp is like honesty. Second lamp is like I'll say second lamp is like courage, third lamp is like industry, fourth is the wit, fifth is the eloquence, I think sixth is the judgment. Seventh is the fellowship. But says सातटा को गोटे निमोनिक्स माध्यम रे जानिले जोटा कि हमें बिट बाय बिट माने कवर करियो कि व्हाट इज द इंपैक्ट एंड व्हाट आर द रेस्पेक्टिव दैट मींस सम लर्नेड पर्सनालिटीज हैव डन देयर वर्क लाइक महात्मा गांधी कोन करछंती नानी पालके वाला कोन करछंती हाउ दिस एस्पेक्ट्स ऑफ एथिक्स हैज बीन रिप्रेजेंटेड through different case laws तो से जेटा गोटे लोक मन जानि परिबे खाली हमें जदि खाली डेफिनेशन वाइज टेक्सचुअल वाइज अप्रोच जिबानी rather than one practical approach how people change their life by adopting this how these values have been adopted and reflected in particular work particular cases तो सबु तक लैंप्स संगरे हमें गोटे दीटा केस कनेक्ट करिबा whatever case merit रे what are the values they established and left for like you know the next future सेटा में डिस्कस करिबा so let's go to the mnemonics first okay for our viewers लाइक हमें जने प्रिज्म रे नै हमर लाइट ता जतले आसी से सातटा ये रे ये जाय तो हमें सेंति गोटे प्रिज्म ड्रा करिबा
This is a prism of 7 lamps. हमें बुझी गले why this lamp. This is the ethical values for a advocate. So I am just writing the mnemonics like my wife is a high court justice high court है तो justice कहे. So my wife is a high court justice. तो एथिरे हमको फोकस करिवार अछि ए कीवर्ड वाइफ ऊपर देन हाई कोर्ट देन जे ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 ठीक अछि. तो मु जदी करूची लाइक एटा बहुत भलो निमोनिक्सटा समस्त मन रहइबो बहुत इजी रे. जदी गला फर्स्ट W रे हमर अछि वीट ର ମିନିଂ ଭାଇ କଣ? वीट ର ମିନିଂ ହେଲା ओडिया रे जदी हम वीट को कहबो दैट मींस प्रतिभा means your inherent ability to like put some light on particular subject. Okay, like create a humor or like a friendly environment or kind of a that wit रे से जो प्रतिभाटा में शो करछे. आई रे होची इंडस्ट्री showcases like the hard work इंडस्ट्री रे छै हार्ड वर्क. एफ रे होची फेलोशिप माने भाईचारा. हाँ भाईचारा माने togetherness जोटा में पढ़ले ब्रदरहुड फ्रैटर्निटी से जिनसटा पढ़थिले. एच रे इज ऑनेस्टी. यू शुड बी ट्रूथफुल करेक्ट अबाउट योरसेल्फ एंड अबाउट योर प्रोफेशन एज वेल. सी रे होची करेज. I think we have covered 1 2 3 4 5. C रे courage 1 2 3 4 5. We missed E here. Oh E here. अच्छा. Okay. E रे होची eloquence is the right attribute of fluency of speaking. How much clarity you have means the way you express your thoughts in a clarified manner. You can fluency in your communication. Like where you can establish the facts and like then J रे होची judgment. So these are like 7 lamps जोटा रे आमो निमोनिक्स अनुसार गले it is easier to remember. but आपण जदी सार अबाउट प्यारी जो देसंती तो सेतिरे फर्स्ट वर्चुअस वैल्यू होची honesty. second virtuous value is courage. So we can know how he interlink honesty with courage. We will gradually go. I think we'll list about the various case studies. industry more connect करि परिबी. Like let's start with honesty को define करिया पई courage को establish करिया पई you need hard work for that. Like industry yes industry जो तमे hard work करछ you need representation. So for that you need wit correct. wit पर this is like once you have wit तमे play कर परिबो then there is there should be a platform of presentation. eloquence. So then it goes to eloquence पर then it goes to the judgment correct. judgment हला पर या कुडा सब को सपोर्ट करिया पे you need a fellowship. जदी भाईचारा होबनी everybody like all the people like if they are not in the right phase तो एगुडा सब गुडा को establish करे. how you treat others. fellowship means how you definitely treat others, your community and your like people surrounding you. Right. Okay, now we are good to go. I think my viewers are they can remember very beautiful. My wife is a high court justice. You can manifest this as well. It's a good manifestation. I got a wife so probably you are thinking about that. Your I can manifest. Could be a high court I'm not justice. Future kind of manifestation. Just now you just create a wit, humor, create humor. So you understand that. Okay. So let's go by one. Like let's describe honesty को case laws या फिर को situations basically is a good example of like honesty रो. तो एटा हम viewers मानु को जणा थिबो नै हमर honesty रे सबटु बेस्ट एग्जांपल इंडिया तो महात्मा गांधी तो के बड़ एग्जांपल हे परिबो. तो he was also advocate. से जने साउथ अफ्रीका रे जाई he has started his career तो practice start करथले सेटू. यस तो तांकर ओटे शॉर्ट स्टोरी टे अछि माने एटा जजमेंटल माने केस स्टडी जो पर न ओटे मोरल स्टोरी टे अछि. तो दिने तांका साबरमती आश्रम रे जतले महात्मा गांधी थिले तो वन वुमन केम जने आसिला तांको को जस्ट क्वेश्चन करथिला जे आपण मो पुओ को मना करंतु जे से बहुत गुड़ खाउछि ताको मना करंतु से गुड़ खाइबोनी. मींस द बॉय वाज ईटिंग टू मच ऑफ गुड जोटा गुड़ कहंती स्वीट लेट बी स्वीट. तो डो टेल हिम दैट ही कुड नॉट एबल टू जैगरी जिनसटा को से बेसी
ଖାଇବନି ତ ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ ତମେ କିଛି ନାହିଁ 10-15 ଦିନ ଛାଡିକି ଆସ ତ ଡିଫାଇନ୍ କଣ ହେଲା ନା ସେ ଓମେନ୍ ଟା ଯେତେବେଳେ 10 ଆଉ 15 ଡେଜ୍ ପରେ ଆସିଲା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ଗାନ୍ଧୀ ସିମ୍ପଲି ଟୋଲ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ବୟ ତ କହିଲେ ଯେ ତୁ ଗୁଡ଼ ଖାଆନି ଡୁ ନଟ୍ ଇଟ୍ ଜାଗେରୀ ତ ସେ ଓମେନ୍ ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲା ଆରେ ୟାର ମାନେ ତମେ ଏତେ ବଡ ଲୋକଟେ ମାନେ ସେଦିନ ତ ସେଠି ବି କହିପାରିଥାନ୍ତ ବଟ୍ ହ୍ୱାଇ ଆଫ୍ଟର 15 ଡେଜ୍ ତ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଅଫ ଦିସ୍ ଷ୍ଟୋରି ହଉଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସେତେବେଳେ ସେଇ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ କନଜ୍ୟୁମ କରୁଥିଲି ତ ମୁଁ ଯଦି ଜଣଙ୍କୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆଡଭାଇସ୍ ଦଉଛି ଆଗ ମୁଁ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ନିଜ ଭିତରେ ଆଗ ଆଣେ କରେକ୍ଟ ଯୋଉଟା ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆଣିଥିଲେ ୟୁ ନିଡ୍ ଟୁ ବି ଚେଞ୍ଜ ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଦ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଅଦର୍ସ ତ ସିଏ ନିଜ ଭିତରେ ସେ ଚେଞ୍ଜଟା ଆଣି କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଗୁଡ଼ ଖାଇବା କମେଇ ଦେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଡଭାଇସଟା ଦେଇପାରିବି ସାମ୍ନା ଲୋକକୁ ତ ଦେଖୁଛ ଅନେଷ୍ଟି like I have qualified myself for that situation where I can advise someone ଆମେ last session ର ବି ଏଇ କଥା change ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ discussion କରିଥିଲେ and you had a dilemma you tried to change your surroundings yourself first so we have like concluded ki like that change need to come within from yourself first then only you can prescribe that to someone else definitely so Mahatma Gandhi has well established that he has first lived like you know that particular thing and then he suggested ସେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲାଟା ବି କିଛି ସଜେସନ ଟା ନିଜ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିକି ଦେଲେ correct so that shows the personality the honesty of the person why that man called a Mahatma not like ସେ ବହୁତ ବଡ ବଡ କାମ ତ କରିଛନ୍ତି but ଛୋଟ ଛୋଟ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ବି ସେ ବହୁତ ଡିସିପ୍ଲିନ ଲାଇଫ ରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି so ଦେଖିଲେ ତ honesty ର ଯଦି ଆମେ ଦେଖି advocate ଲାଇଫ ରେ କଣ ତାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ରହିବା ଦରକାର you should be always honest to about your client ଆପଣ ନିଜ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ପ୍ରତି ଅଦର ଅନେଷ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର ଦ୍ୟାଟ୍ ଅନେଷ୍ଟି ଟ୍ରୁଥଫୁଲନେସ୍ ୱିଲ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଲାଇକ୍ ବେଟର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆସିବ ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଆମେ ତାକୁ କିଛି ପଇସା ପ୍ରଲୋଭନରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଲୋଭରେ ବହୁତ କିଛି ଇଏ କରିଦେବା ତ ଅନେଷ୍ଟି ସୁଡ୍ ବି ଦେୟାର सेकेंड आम जो सेकेंड लैम्प टाक जीवा दैट इज अबाउट करेज करेज टा वन ऑफ द फाइनेस्ट एट्रिब्यूट माने ऑल मेन कैन नॉट बी करेजस सो जो करेज एट्रिब्यूट टा रहउची हमर आपण गोटे केस स्टडी देखिथिबे जदि मु कहबी आसाराम बापू रेप केस जोटा ये हेतिला जोटा लॉयर जने थिले पीसी सोलंकी जो माने द फीमेल लेडी नॉट लेडी ही इज अ मेल पर्सन पीसी सोलंकी वाज अ मेल पर्सन तार गोटे मूवी भी अछि आपण मनोज वाजपेयी कर भी देखि परिबे तो सेथिरे पीसी सोलंकी ऊपर को बहुत सारा से माने लाइफ थ्रेट आस्तिला जोटा से माने जो विक्टिम भी दिला ताकू लाइफ थ्रेट ता फैमिली में लाइफ थ्रेट थिला बट दे स्टूड अप एंड आसाराम बाबू से लोड बहुत बड़ा पर्सनालिटी थिले तो सेते बेले पावर पोजीशन मीडिया जुडिशियरी नहीं मीडिया पॉलिटिक्स एंड जो पावर प्रेशर थिला एंड सो फार आई कनेक्ट दिस वाज माने बहुत लॉन्ग स्ट्रेच हे थिला केस एंड इट टुक इयर्स टू for final verdict and through that judicial process trial chalchila vele they have been attacked and they have been pressurized and they tried to modify the facts and figures but finally it went to their favor and the small lady like she got her justice like सत्तटा के भी लुचि रहेनी जो जिंसटा and it has been established आ गोटे बहुत बड़ जिंस टी करेज र कथा में एथि पे उठौचे though they have survived and they fought back and they stood on their stand on the counterpart Jetmalani was the counsel for Asaram Babu. Jetmalani himself is like a very known and powerful figure and to counter him it is a really a moral and courageous task to do for someone's favor. So Mr. Solanki has done a good work and that shows the ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ final verdict ମିଳିଲା ତାଙ୍କ favor ରେ at the same time court has like pointed particularly though Jetmalani is like fighting from Asaram Bapu side and though they have like advantage on the situation they have tried to modify the case they have literally manipulate से माने fact manipulation बहुत करथिले and बहुत बड़ा जिंस करथिले से टाइम रे से माने गोटे मीडिया ट्रायल कंटीन्यूअस से माने रन कर सारथिले victim against continuous there was a media trial जोटा को court condemn करथिला being so responsible and good you shouldn't modify the facts and figures and you shouldn't do the media trials so it shows like the courage of Mr. Solanki like how he has like kept his ethical value intact and से निजो के करप्ट हो देई नांदी तो इतना हमें जानिले पीसी सोलंकी रा तो बहुत सारा एमती बहुत सारा भी अछि नेक्स्ट विल गो टू द थर्ड industry hard work industry तो डेफिनेटली इंडस्ट्री इज बेसिकली गोटे टेक्सचुअल टर्म में कहले इट इज हार्ड वर्क right बट इन अ करेंट सिंटैक्स अपन
देखिए यदि एते सारा जो केस लॉज रहउची माने आपण गोटे देखिए भलो केस लॉ को जदी स्टडी करिवे देयर आर वेरियस माने चेंजेस माने बहुत सारा लॉज एट्रिब्यूट आर्टिकल्स गुडा को इन्वॉल्व हेके रहउची कोठी ह्यूमन राइट वायोलेशन होउछ तो कोठी माने विक्टिम अगेंस्ट भी केस पळउची तो सेठी जो लॉयर एटीट्यूड रहे दरकार ही शुड ऑलवेज बी लाइक नॉट ओनली हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क भी करिया दरकार एंड गोटे राइट अप्रोच रे भी करिया दरकार आपण जदी ओनली सिंपली केस टा को गो थ्रो करिकी गोटे फेवर रे खाली लडुचंती दैट इज नॉट इंपोर्टेंट यू शुड गो थ्रो पिन बाय पिन हाउ यू विल सेव you have to do a lot of research on that lot of citations clarity of thought clarity of mind जोटा सेटा आपण को आसीबो जेतले आपण निजे केस रे इन्वॉल्व होई परिबे तो ग्रेजुअली हार्ड वर्क का रिप्लेसमेंट नाही कोठी आपण it's needed because ultimately like if you are not prepared or you haven't gone that depth in a particular case and you are representing in a court so you are like wasting time of the judge definitely you're wasting time of everyone okay and particularly for your client for who you are like representing you are not doing right justice from your end for your client as well definitely so whenever you are like putting up a case you literally have to do deep dug the thing you have to do deep good research you have to pull out related case studies where like the verdicts has been already established citation Supreme Court previous judgment correct so it's a hell lot of work and you shouldn't shy about those before preparing a case you should go really deep into those things then only you can like give justice to the case you are putting up सेटा गोटे थाए नै the more you get involved into something the more energy that आपण सेटा अट्रैक्ट कर दबो तार आउटकम टा भी सेते ब्यूटीफुल हो मींस हार्ड वर्किंग मींस इट्स ऑब्वियसली मींस ओरिएंटेड प्रोसेस जोटा कि डियोंटोलॉजिकल एथिक्स गोटे अछि इफ यू फोकस ऑन योर मींस ऑब्वियसली द एंड विल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ जोटा गांधी भी कहउतले बुद्ध भी कहिसंती आपण मींस रे फोकस करंतु ऑब्वियसली हार्ड वर्क टा आपण निजरो केस रे फोकस करी आपण एंड रिजल्ट भी आपण बेटर मिलिबो सो ओ यार और गोटे भलो एग्जांपल देई परिबी गोटे केस लॉ हिसाब रे हमर जो पॉस एक्ट थिला पॉस एक्ट आसीबा पूर्वरु इट केम फ्रॉम हमर जो विशाखा स्टेट ऑफ राजस्थान वाला जो केस थिला 97 रो पॉस रो टिके हम व्यूअर्स मान को ये कर दियंदु दिस इज लाइक प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट इन वर्कप्लेसेस तो सेटा पर केस ता थिला तो तारो इंपैक्ट एटा थिला कि दिस इज अ लाइक अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ जुडिशियल लेजिस्लेशन वाया PIL बहुत सारा PIL आस्थिला जहा ऊपर हियरिंग हे कि हमर पॉस एक्ट 2013 रे पास हेतला सो एथि रे कोन हेतला व्हेन लाइक द फाइनल डिसिजंस came the purbaru the entire bench they have done a very good research because setole amar semti kichi guidelines ya evidential kichi rule regulations artificial intelligence भी नथिला किछि भी नथिला ना no generally case AI को depend करे नी case depend करे what are the past cases या फिर को scenario रे कोन verdict सही छी स्मार्ट वर्क हे जेतांदा इजी हेतांदा no what they had done amar international court हे गला different countries रो जो individual cases हे गला the entire bench the entire judiciary system they went through those evidences the cases one by one they really had done compiled everything and then they finalized what to put on a POS act on which cases what should be the punishment and then the entire thing has came up so it shows like that collective hard responsibility collective responsibility and hard work this shows a good approach by judiciary it says on this particular case this jo industry wala जो हमारा जो अच्छी जो लैंप टा एथिकल जो थर्ड लैंप ऑफ एथिक्स तो दैट हैज बीन वेल एस्टैब्लिश्ड इन दिस पर्टिकुलर केस सो तो सेटो हम बुझी परले कि हमें देखले आपण जानि परले ए सब जिंस को आपण माने गोटे हम कय स्टोरी आ केस कयर मूल्य होची जे गोटे मेकानिकल न हो जिंस आपण तार गोटे एथिकल वैल्यूज को कंप्लीटली एट्रिब्यूट के हमें खाली जे टेक्सचुअल एरिया जे ता एसेंस बुझी परबेन आवर मेन पर्पस इज टू प्रोवाइड यू द एसेंस ऑफ व्हाई दिस वैल्यूज आर important and what these values will lead you to further अच्छा ठीक है हमें ताले fourth we are good to go like fourth clamp पे हमें जीवा fourth clamp is like wit जोटा हमें कहले होटे presence of mind it's very well connected हमारा first असला honesty honesty टा गोटे internal aspect more thought process more inherence जदी सेटा को feel करि पारुची ताको establish करि पारुची that's a good thing that is first comes honesty ताको establish करिया पय need courage जदी मो पाखरे साहस नाही
ମୁଁ ତା ପାଇଁ ମୁହ ଖୋଲିକି କହି ପାରିବିନି I cannot argue on that I cannot demand on that ତ ତା ପାଇଁ ମତେ ଦରକାର courage lot of courage ଏବେ ମୋ ପାଖରେ honesty ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ସାହସ ଅଛି କାମ କରିବାର ଅଛି hard work ତା ପାଇଁ I need definitely have to go through hard work ତ again hard work came like connected first second third ଏବେ hard work ହେଇଗଲା I have everything on my paper I have lot of courage to put it in front of the judge or judicial system and I have honesty I feel I'll give it a good value तो next comes कि भाई मु ताकू जदी harmonically environment भितरे put करि परिबिन the reason is like मु गोटे जिंसो को emphasize करूची तो again it is like I'm disturbing a like current system and I'm trying to put something on a particular thing rest of the जो presence अच्छी they may or may not accept it definitely right and I have to use like a positive humorous attitude good word and a good presentation if good word and good presentation is missing then others want to connect and so interest mismatch होगा and जदि interest mismatch होगा जोटी मु focus करिया को चाहूँची जोटी समस्तों को attention drag करिया को चाहूँची I'll fail to establish that तो ता पाई definitely I need to have a wit I should know how to put it how to play around तो हमें देखिले so wit true जोटा presence of mind and humor होजी तारे next lamp को हमें जदि जीबा wit परे फिर next आसिला eloquence जोटा कि हमें जदि मते कथा कहबार जदि मो पाखरे जो से बाकचाटुता नहीं मो पाखरे जदि से बाग्मिता नहीं तो probably I cannot put my words in right place right context मो मिस कर थाई पारे तमोटे नजरे तम सराउंडिंग की तमे जो कॉलेज रे पढु जो सराउंडिंग तमो के लागे eloquence काहर गोटे बहुत भलो गोटे देखि दिया भितरे माने appreciated personality good people are there you yourself like तमे बहुत सारा जिंस रे जाई की को and about others I've seen couple of people जो माने front represent करंती and को भी thought process रे participate करंती they are really good with their words and communications yes so like, they should develop that as well तो eloquence जदि हमें जिबा तो wit and eloquence टिके पाखा पाखी connected मु एटा कहबी eloquence is a skill where you can play around your words definitely and wit is a skill where you can align it with humor with environment भितरे तमे तमरो वर्ड प्ले टाउ केमती बेस्ट फिट कर परिबो तो जदी eloquence रे कहबी माने clarity of thought there first of the clarity of thought दरकार आपण करू clarity of thought means गोटे simple जिंस कहबी simplicity is the highest sophistication means if you know that if you cannot describe a thing in a simple manner then you have not understood it perfectly जदी गोटे जिंस को आपण सरल भाषा रे बुझै पर नांदी तबे से जिंस रो गभीरता आपण जानि नांदी तो गोटे जिंसटा को सरल भाषा रे संक्षिप्त रे बुझेबार कला होची eloquence with right attitude और सामना लोक रे जने मन मोहि ने कथा रे तो इट्स अ गुड एटीट्यूड ऑफ द एडवोकेट ना भाई सब एक्सपेक्ट मैटर करे लाइक यार गोटे बढ़िया एग्जांपल दे परिबो तमे हमरो जो मेनका गांधी केस मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 हां आर्टिकल 21 हैज बीन एस्टैब्लिश्ड माने एटा इंपैक्ट थिला केस रो एंड दिस केस वाज ऑल अबाउट impounding a passport without hearing तो जिंस हेतिला कोन ना कि गोटे पासपोर्ट माने ट्रांजिट बेले तो इंपाउंड करा हितिला बट ता ऊपर स्कोप चांस दिया हि नथला कि एटलीस्ट देयर शुड बी अ हियरिंग यस तो गोटे कन्विक्ट अछि तो जने सर्वाइवर अछि तो तारो भी ड्यूटी बनउछि कि भाई से कहू तो रीजन कहू ताकू भी माने सुनिबार गोटे अधिकार तार थिबा दरकार दैट वाज बीन मिसिंग ऑन दैट पर्टिकुलर केस ए कथा कहलो जो हमर सेक्शन 21 हैज बीन एस्टैब्लिश्ड राइट ऑफ प्राइवेसी क्लीन एनवायरनमेंट एगुडा सब को एगुडा सब पड़थिला माने कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरलिंक करके द वे ही प्रेजेंटेड तो इट वाज मस्ट एप्रिशिएटेड हां तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ करेज एंड विट एंड इलोक्वेंस रीजन इज कि हमर जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन ता जोटा हबार थिला तो द गाय हु डिड दिस एंड एस्टैब्लिश्ड दिस इट shows his wit and eloquence other than this wit and eloquence like interpreting like हमर जो current constitution because hearing हेइ नथिला and ता परे जेतोले केस हेइ कि माने hearing करूचंती they have to well interpret the constitution so that like it will go in their favor and जेतोले verdict asla in favor this shows like how this case becomes a like very good example of wit and eloquence हां मोर ए थॉट रू आ गोटे जण प्रोमिनेंट लॉयर को नाम मने पड़ला जे नानी पालकी वाला माने तांको एमती भी कुआ जाय जदी वर्ल्ड रो टॉप 3 जण लॉयर को बछा जाय हिस्टोरिकली माने आज जाय भी बछा जाय तो नानी पालकी वाला सेट वन ऑफ देम हेबे माने भाबंतु नानी पालकी वाला
जे केशवानंद भारती केस रे ही शोज हिज एलोक्वेंस स्किल जोटा कि से गवर्नमेंट को भी पाद तळु आनि देथिले सेतବେଳେ सी इज अ वेरी सिंपल थिंग केमिति केशवानंद भारती ही himself is a like a saint monk yeah he has gone through a lot of scriptures he has a very good defense सब जिंस नै कि आस्थिले facts figures सब नै कि आस्थिले but he cannot fight or represent in front of court right तांका council ले नानी पालकी वाला थिला if the council is not that much witty and eloquent how the entire thing will be translated and kept in front of the court and you are fighting against the central government yes it is not an easy thing not an easy task you are fighting against the whole nation state माने जोडा थिला but he shows like कहलिबा world रो top 3 जण लॉयर को भीतर जदी आपण का very eloquent lawyer like he's very good with his words and interpretations yeah तो तापर next goes to judgment हमें सब जिंस नै कि रखि देले कोर्ट सामने then comes the judgment तो जजमेंट गोटे एमिति जिंस सेटा पॉजिटिव रे भी जाई पारे नेगेटिव भी जाई पारे तो एटा गोटे लॉयर रो स्किल रहबा दरकार से आगुरु एंटीसिपेट करि पारुथिबा दरकार सब जिंस को माने गोटे माने आखी नाक कान सब पंच इंद्रिय पूरा सतर्क रही से जजमेंट ता जानि एंटीसिपेट करि पारुथिबा दरकार जे व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट आ ता पई से मेंटली प्रिपेयर हबा दरकार जोटा मु जदि को स्पोर्ट्स सहित रिलेट करबी लाइक कहंदी व्हाई एमएस धोनी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कैप्टन because on spot you should have that माने ability to understand the thing analyze the thing and you could make up your strategy if you're not alert if you cannot analyze you cannot make your strategy so it's a complete like live war game you are on a court you are going through a judicial process hearings are going on you doesn't know when what will come and the bent will go to like which side whatever the situation if your defense is not ready you cannot plan your strategies then chances of failure is there so या पई दरकार करने कि you should be like that much judgmental you know कि what is happening and what next is coming and what should I do what should be my response means you should have 2 to 3 step ahead of that ये जोटा कि हमको जोटा क्रिकेट सहित जोड़िले एमएस धोनी तांका माइंड रे सदाले 5-6टा प्लान बैकअप प्लान थाए कि एठी हेले सेही मोमेंट रे भी सडन डिसीजन चेंज करि नियंती जोटा कि सचिन तेंदुलकर तांका गेम रे जणा जे बॉलर्स माने कहंती जे माने तांको जणा था जे हम नेक्स्ट डिलीवरी कोन करिवु द वे ही माने मेड करंती तो सेमी जदि हम देखिया हमर जने मधु बाबू थिले मधु बारिस्टर हम ओडिसा रो सबटु माने मधु बारिस्टर सेतळ टाइम रे आई थिंक गोटे बढ़िया थे कळा घोड़ा चढ़ीबी मधु बाबू संगे कड़ा घोड़ा चढ़ीबी मधु बाबू संगे लड़ीबी तो तांकर जो जजमेंट कैपेबिलिटी है इंडिया रे बहुत माने तांको भीतर बहुत सारा स्टोरी भी अछि तांको जजमेंट कैपेसिटी को वेल माने हम गर्व गौरव से ओडिसा रो ओटे जोटा कि तांको बहुत एप्रिसिएशन मिली छी खाली हम इंडिया रो नुए बाहर भी रीजन जानिछो तार भीतर गोटे छोटो फैक्ट है कहूछ डेफिनेटली विल दो ही इज क्रिश्चियन ही हैज ऑलवेज फॉट फॉर ओडिया रेस्पेक्ट ओके ओडिया रिप्रेजेंटेशन पई से जो लड़ी चंदी जते सब केसेस तमे बे एप्रिशिएट करूछो एटा ही पर एबे जो मैं रिलीजन ऊपर पळचंती बहुत सारा जिंस होउची बट ही हैज केप्ट हिज रिलीजन वे बैक behind mane the values of Oriya being an Oriya and for the Oriya respect he has done a tremendous work definitely आगो माटी मार संपर्क देन धर्म ये सब आसीबो तो सेतळे से जो कहितले आपण सेटे उत्कल सम्मेलन करथिले मधुबाबुकर उत्कल सम्मेलन गोटे थिला से ओडिसा रो माने ओडिसा गोटे भाषा भित्तिक राज्य हो बोली कारण सेतळे हमर बेंगल आ माने मैड्रास प्रोविंसेस रो बहुत सारा इंपैक्ट पड़थला जेटा ओडिसा मानक अस्तित्व धीरे धीरे मिटुथिला सेमानकर they never have recognized or they didn't माने चाहू नथिले जे ओडिया भली गोटे स्वतंत्र राज्य बननु recognition to this particular entity पारला खेमुंडरे जे राजा थिले सेतबेले कृष्णचंद्र गजपति राय से गजपति देव से माने ओडिसा रो भी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हेतिले तो 1936 रे फाइनली ओडिसा आई थिंक अप्रैल 1 रे हमरो ओडिसा मिलला बट ता भितरे मधुबाबुंकर कंट्रीब्यूशन बहुत उत्कल सम्मेलन लीडिंग उत्कल सम्मेलन फर्स्ट अतुल्य ताको ये करि होबनी से विषय हमें डेफिनेटली गोटे ओडिसा पर्सपेक्टिव रे जतले वीडियो बनेबा सेतले हमें क्लियर ये रे जिबा नाइस तो एबे नेक्स्ट लैंप को जिबा हमें लाइक सब त हमें कहतले जजमेंट सब ये करतले सब फेलोशिप बट केस टा जतले सरी जाउची केस टा सरी गेला बर्तन जजमेंट सब हो गेला तब ता परे जतले फेलोशिप रे इंपोर्टेंस कोन ओटे एडवोकेट लाइफ रे बिकॉज़ आपण एनीवे सेम कोर्ट रे प्रैक्टिस करिवे सेम एनवायरनमेंट रे आपण लोकन से मिसिबे मे बी आज आपण फ्रेंड आपण अगेंस्ट केस लडुची ता बोले से आपण शत्रु तो न करेक्ट इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग
representing his client and you are representing your views or your client. तो मे बी प्रोफेशनलिज्म रे सेतिकी रेस्पेक्ट रहा दरकार कि आउटसाइड द कोर्ट रूम यू आर फ्रेंड्स. तो आपण से गोटे लर्नेड लॉयर को सेतिकी रेस्पेक्ट देकी कथा होता दरकार. जज को भी ऑनर गोटे ऑनरेबल जजेस की तांको जो रेस्पेक्ट दबा कथा से जिंसटा दया दरकार. जोटा गोटे फेलोशिप गोटे ना फ्रैटर्निटी ब्रदरहुड रो ये करे जोटा आपण को एटमॉस्फियर भी बेटर रखे. तो see the thing is when somebody is going and practicing in a court basically he is attending an office. Yes. He is an official. Yes. And jitole gote case trial chalichi there will be like two parts of counsel. Both side of counsel are representing their clients. They have to like do due diligence towards their clients and to the court. Yes. At the same context it will look like there is a war between two teams or like they are competing against each other. But ସେଇଟା ସେଇ moment ରେ ସେଇ case ପାଇଁ ସେଇ premises ଭିତରେ for a certain period of time. And once that is gone you all are like a part of that entity. Yes. That office and you are all officials. Definitely. Being individual ତମ ଭିତରେ ଯଦି interpersonal relations ଭଲ ନ ରହିବ and if you will think like the other person as your enemy then you are not doing the good thing. Good values will be like compromised. Because jaha bhi hochi this is because of the case, because of the clients. You are in a profession, tame jo profession ro cha next person is in the same profession. Jo office tame share korcho se bhi sei office share korchi. Jodi tame interpersonal jinso kharap rakhibo to overall it will impact the harmony of the court. Negative energy always create negative outcomes. So ultimately like it will affect jo amaro administration of law as well. Administration of law. तो सेथुर गोटे मोर गोटे पर्सनल येटा कहै जे स्पोर्ट्स सहित भी रिलेट करबी कि हमर ऑस्ट्रेलिया इंडिया के इंडिया पाकिस्तान जेतले मैचेस भी होउची ऑन द फील्ड व्हाटएवर हैज हैपेंड दे सेठी भी से माने विराट कोहली बहुत सारा एग्रेसिव ही पहले कहि दियंती कि ये कर देन. बट आउटसाइड फील्ड आपण देखिबे तांगु बहुत देयर चिल पीपल मिसी के सेठी चा पिउते कॉफी पिउते बैट एक्सचेंज करथिबे इवन स्ट्रेटजीज भी माने शेयर करथिबे जोटा आईपीएल कल्चर रे भी देखुते बहुत सारा फॉरेन क्रिकेटर मिसी फ्रैटर्निटी नो दैट सेड आउट ह्यूमैनिटी एस्पेक्ट देखिले दैट इज इंपोर्टेंट. बट इनसाइड व्हेन यू आर इन कॉम्पिटिटिव माइंडसेट कम्पीट बट आउटसाइड योर कॉम्पिटिटिव माइंड यू शुड बी फ्रेंड. तो सेटा गोटे शो करे आ गोटे पर्सनल मो लाइफ रे एग्जांपल देबी वन ऑफ द सीनियर एडवोकेट जोटा कि हमर गोटे विभू त्रिपाठी जे थिले तो तांको हम गोटे प्रोग्राम को इनवाइट करिया जाइतिलु. तो ड्यू टू सम माने किछिटा सिनेरियोस जोगु हम तांको सडनली कनेक्ट करि पर नथिलु. तो टिके लेट हे जाइतिला सी हम गोटे टाइमिंग देइतिला हम जाई पहुंच जाइतिलु बट टिके लेट हे जाइतिला आसीबार. बट सेटी मोमेंट रे कोन हेतला ना जेतले सी आसीथिले वी माइट बी जेतु एते बड़ पर्सनालिटी आसु वी प्रिफर टू वेट देयर. तो सी जेतले आसीले फर्स्ट थिंग से हम कहितिले गोटे जिंसो जोटा कि मु भाबिथिली कि आइदर से एटा कहिबे नले कहिबेनी. तो सी गोटे बढ़िया कथाटा कहितिले कि मोर एबे मन अछि कि आई एम सॉरी माय फ्रेंड्स आई एम लेट मो फोन टा लागि नथिला मु जिम रे रहि जाइतिली. तो देखंतु माने बॉयस रे बहुत बड़ ये रे भी बहुत बड़ उपाधि रे भी बहुत बड़ बट स्टिल गोटे सिंपल माइंड he degraded himself from to निजर महानता आहुरी बढ़ाई देले सेठी कहले कि सॉरी माय फ्रेंड्स in a sense like एटा कहबा मु मीन करूची से तांको पोजीशन इज pretty high but degraded in a sense कि he came down to your level and he is addressing you as a friend. I'm sorry because I kept you waited and your time has a value. And seen is a grassroots level बोले कि I'm sorry that shows the like you know the bigger aspect, the value based aspect like when you were carrying that worth सेटा गोटे तांको मु से जिंसटा 7 lamps जेतले पढिली फर्स्ट टाइम जानली जेतले फर्स्ट थॉट केम अबाउट हिम लाइक एते सीनियर पर्सनालिटी हेगी but he's carrying all those values all those lamps of ethics in his profession ଆଉ तापरे भी जोटा हमर भितरे जो कन्वर्सेशन हेतिला कंप्लीटली ही वाज मच इंटरेस्टेड कि तमे लाइफ रे कोन करिया को चाहौ जो व्हाट मी गाइडेंस रो भी हाथ हो माने बहुत माने इट इज लाइक यहाँ पर स्टिल मन अच्छी सी पर्टिकुलरली एड्रेस करथिले यू ऑल आर लॉ स्टूडेंट्स फ्यूचर लॉयर्स एडवोकेट्स यू आर इनसाइड दिस प्रोफेशन नाउ बीइंग अ सीनियर like a professional it's my duty to handhold you duty to give you those internal informations that mentoring has connected me a lot though it was a very short moment but he tried to make us more comfortable नहीं comfortable सांगरे से सेटा एक्सपेक्ट करथले कि तमे कनेक्ट करो how much you are ready and how much it has been left and से गोटे कथा कहला अपन मन थियो जे we need lawyers who
can speak Yeah. can speak Can who speak. can speak ତ ଯୋଉଟା କି ଯାଇକି ଲୋକ କୁହନ୍ତୁ କି ଲୋକ ପାଇଁ ଲଢନ୍ତୁ କି ସେ କହିଥିଲେ ବି ଯୋଉଠି ବି ଯାଉଛ ଲୋକମାନେ ନିଡ୍ ଯାହାର ଅଛି ତାକୁ ହେଲ୍ପ କର ଇଏ କର ସୋ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ଅଲ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ ଦିସ୍ 7 ଲ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଆମେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କଭର କଲେ ତ ଆମେ ମେନ୍ ଆମର ମୋଟିଭ ଥିଲା ଯେ ଏସେନ୍ସ ଟାକୁ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ୱିଥ୍ ସମ୍ case laws case and laws our personal life here ତ ଭାଇ ଆଜ ଏ ପର୍ସନ ଆଇ ନୋ ୟୁ ତ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ 7 ଲ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଯଦି କିଛିଟା କହିବି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ବି ଲ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଅଛି ଲାଇକ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ସିନ୍ ଦ ଅନେଷ୍ଟି ମୋଷ୍ଟ କରେଜିୟସ୍ ଆପଣ ବି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଇଏ କରନ୍ତି ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ ଆପଣଙ୍କର ଲ୍ୟାମ୍ପ ଭିତରୁ ମୁଁ ଯଦି ସବୁଠୁ ବଡ ରଖିବି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାନେ ୟୁ ଆର୍ ମୋର ହାର୍ଡ ୱାର୍କିଂ ଆଇ ଇନ୍ ମାଇ ଭ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଏଲିକ୍ୱେନ୍ସ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି not exactly ମୁଁ ଏକଥା ବି କହିବି like it's not me alone ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଥରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ସ୍କିଲ୍ସ ଅଛି ସି ଲଟ୍ ଅଫ୍ ପିପଲ ଆର୍ ଅନେଷ୍ଟ ବାଇ ମାନେ ଇନହେରେନ୍ସ ଓକେ ତାପରେ ଜିନିଷ କଣ ହୁଏ କି ୱିଥ୍ ସିଚୁଏସନ ୱିଥ୍ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ସେଟା ଉପରେ ଗୋଟେ ଯୋଉ କୁହନ୍ତିନି ଟାଇମ ସାଙ୍ଗରେ ମଳି ଜମିଯାଏ ସେମିତି ବି ସିଚୁଏସନ ହୁଏ ସେଟାକୁ ଲୋକ ପ୍ରାୟୋରିଟିରେ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ରଖିପାରନ୍ତିନି ସେଥିପାଇଁ ହୁଏ ବା ବିକଜ वी आर ଆଭରେଜ ଅଫ 5 ପିପୁଲ ମାନେ ଆମେ ହଉଛେ ଆମର ସରାଉଣ୍ଡିଂ ର ଯୋଉ 5 ଜଣ ସହିତ ବେଶୀ ମିଶୁଛେ ସେଇ 5 ଜଣଙ୍କର ଆଭରେଜ ହଉଛେ ଆମେ ତ ସେଟା କହିଥିଲେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଜିମ୍ ରନ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ୟୁ ଆର୍ ଆଭରେଜ ଅଫ ଦ 5 ପିପୁଲ ଯାହା ସହିତ ତମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ ମିଶୁଛ ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ କିଛିଟା ମଳି ପଡି ଯାଉଛି ମାନେ वी शुड चेंज दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट और यू शुड सिलेक्ट ସେ କଥା କହୁଛି each individual has some like good aspect କିଛିଟା ମିସିଂ ନେଗେଟିଭ ତ ମୁଁ କହିବିନି କିଛିଟା ଜିନିଷ ମିସିଂ ବଟ୍ everyone has something unique yes if at all about these 7 lamps if I have like 3-4 lamps within me and both low ଜଳୁଛି that is okay that is with me ମତେ ତାକୁ ହାଇ ଜଳେଇବାର ଅଛି that means it needs a little more finishing those values କୁ carry କରିବାର ଅଛି ଯୋଉଟା ମୋ କାମରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରେ definitely ଯୋଉ ଜିନିଷ ମିସିଂ ଅଛି ତାକୁ ଅଲଗା ସୋର୍ସ ଇମ୍ବାଇବ୍ କରି ତାକୁ ବି କ୍ୟାରି କରିବାର ତାକୁ ଆଡ୍ ଅନ୍ କରିବାର ଅଛି ଲାଇଫ ରେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ଆଡ୍ ଅନ୍ କରିବାର ଅଛି ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଅଲ୍ अबाउट ଲାଇଫ ସୋ ମତେ ଲାଗୁଛି ଆମ ଭିଉଅର୍ସ ମାନେ ଆମେ ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ କହିଲେ ମତେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇପାରିବ ଏମିତି କୋଉ ଗୋଟେ ଆମର କେସ୍ ଅଛି କି ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜୁଡିସିଆରୀ ଜିନିଷ ହେଇଛି ଯୋଉଥିରେ 7ଟା ଯାକ ଲ୍ୟାମ୍ପ ର ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ଅଛି ଆମେ ଯୋଉଗୁଡାକ ତ ଏବେ ଡିସ୍କସ କଲେ କୋଉ କେସ୍ ରେ କୋଉ ଗୋଟେ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଦିଟା ଲ୍ୟାମ୍ପ ଏମିତିର ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ସ ଅଛି ଏମିତି କିଛି ଅଛି ତମ ନଜରରେ ଯୋଉଠି ସବୁତକ ଲ୍ୟାମ୍ପ ର ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ଅଛି ସବୁତକ ଲ୍ୟାମ୍ପ ର ଯଦି ଗୋଟେ ମୁଁ ଯେତିକି ମନେ ପଡୁଛି ଗୋଟେ ଜାଲିଆନାବାଗ କେସ୍ ଇଏ ହେଇଥିଲା ତ ସେଥିରେ ଆମର ସେତେବେଳର ମାନେ ନାଟା ଆଇ ଥିଙ୍କ ଅୟର ଜଣେ ଥିଲେ ୱାନ୍ ଅଫ ଦି ଇଣ୍ଡିଆସ ର ଟପ୍ ଇଏ ସେ ଲଢିଥିଲେ ପୁରା ବ୍ରିଟିଶ ମୋନାର୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ରେ ତ ଇଟ୍ वाज ବଟ୍ ରିସେଣ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସେମିତି କିଛି ରିସେଣ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆପଣ କହିଲେ ଆମର ଯୋଉ PIL ସିଷ୍ଟମ ଓକେ ହଁ ଠିକ ଅଛି this is a very good example this is not a case but it's a very good system which reflects all like 7 lamps of advocacy କେମିତି କି when you are going for a PIL you definitely you require courage to take systemic issues PIL ରେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ଗୋଟେ सोशल इशू ଗୋଟେ सिस्टमिक इशू अगेंस्ट ଗୋଟେ पेपरଟା पुट କରୁଛେ ତ फर्स्ट ତ ତମକୁ ସେ करेज ଦରକାର ऑनेस्टी नथिले ତମେ ସେ करेज को ऑनेस्टी निज ଭିତରେ ଆସିଲେ ହିଁ करेज ତମେ शो କରି परिबो ତମେ ସେ पेपर पुट कर परिबନି ତ फर्स्ट थिंग इज लाइक द ऑनेस्टी ऑफ करेज वाला जिंस दरकार टू गेट फॉर अ PIL देन इट डिमांड्स इंडस्ट्री एज वेल कोन पई PIL जेतोले तमे पुट करछो यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ ग्राउंड वर्क बहुत सारा तुमको हार्ड वर्क करिया पड़िबो ग्राउंड वर्क कर पे तो फॉर दैट लाइक दिस इंडस्ट्री लैम्प रिफ्लेक्शन नेक्स्ट इज लाइक द सेंस ऑफ फेलोसॉफी फॉर द मार्जिनलाइज्ड तमे जनरली PILs को माने होजी जो माने सर्वाइवर्स जो माने संगरे डिस्क्रिमिनेशंस अछि जो माने को राइट्स फ्रंट को आसुनी जो माने वोकल नो ताको वॉइस फ्रंट को आसुनी यू आर रिप्रेजेंटिंग देयर वॉइस तो इट शोज योर फेलोशिप लाइक तमे गोटे मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी पई यू आर रिप्रेजेंटिंग एंड यू आर डूइंग वर्क देन कम्स द जस्टिस और द जजमेंट ऑफ द जुडिशियरी how you could anticipate कि क्वाड जाउ डायरेक्शन so it's like another lamp has been established and finally यार जेतेबेले को भी पिटिशन सॉरी जो तमे PIL अगेंस्ट पढुची तो तार जेतेबेले जहां भी रेमेडीज आसुची जो सॉल्यूशंस आसुची केमिति आसुची यू हैव एनालाइज दैट द एंटायर थिंग तमे सब जिंस कर देलो कोड भी सुनुची सब जिंस देन फाइनली दैट wit at eloquence puts the thing so that the solution comes or the remedy comes means it everything depends upon how you present your case so a PIL scenario a PIL system re all these 7 lamps has been like value has been established
established. well researched. ଆଉ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା କହିବି ଆମେ ଏବେ କମନ ମଡର୍ନ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ରେ Okay. these are like ସାତଟା lamp established lamps but ଏବେ modern context ରେ there is another lamp added, the eighth lamp though ସାତଟା lamp established ହେଲା ପରେ it is in the modern context ଏଥିରେ କଣ ନା କି apart from these 7 values ଆଉ କିଛି values କୁ prescribe କରାଯାଇଛି about eighth because lamp. ଯେତେବେଳେ ଆବର୍ଟ ପେରି ଯେତେବେଳେ ଦେଇଥିଲେ he given in like much old ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ society ଏତେ Develop boom ହେଇନଥିଲା। ହେଇନଥିଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ society evolve ହେଲାଣି correct ଏବେକା context ରେ if we will go for eighth lamp it says about the fairness in a sense ki like the fair play of justice or the judiciary system, Yes. which says like you have to go beyond honesty, you have to do due diligence to your administration of justice, yes you have to keep integration in your negotiation, lamp of service be established hoba darkar, yes lamp of tolerance when somebody is like arguing with you you have to have that tolerance so that you can hear and you can counter. obviously tolerance न रहले आपण Overall this is for the people, so you have to emphasize humanity as well. Yes. So lamp of humanity Lamp as of well. So humanity. collectively all these 3-4 aspects comes under eighth lamp of advocacy, Eighth lamp the of- added lamp in our advocacy. so we have well covered and Probably more, yes, probably we have well covered it goes this, little bit lengthy but essence ବୁଝିବାକୁ ପଡିଲେ ତ ଟିକେ ଯାଏ ହେରି କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ correct. ଆମେ ସେଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଆଉ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ ର କଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଛି and more importantly କିଛିଟା prominent personalities को भी example ନେଇଥିଲେ। and ଆମେ ଯୋଉ ଖାଲି 7 lamp ରେ ରହିନୁ what is the futuristic lamp you should the eighth lamp we tried to ସେ ଜିନିଷଟା ବି ଆମେ ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ଆମ ମୋଟିଭ ସେୟା ଯେ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନକଲକେଟ କରିବାର ଅଛି not the textual format rather than essence of the idea ତ ମୋଷ୍ଟଲି ଆମେ କଭର କଲେ 7 lamp ଆଉ ଆମେ these are like moral aspects of ethics. Yes. The 7 moral aspects, the values, 7 values which has been established and always advised to carry if you are into a judiciary process, you are a part of that. And common ebeka modern context, right? The eighth lamp, the advanced like values which need to be carried out. So in this session, we have collectively tried to cover the entire 7th lamp and 8th lamp as well. And hope we have created some good understanding for you people so that you would have got some clarity over this now. And तो एई जिंसटा 7 लैम्प भी देखो खाली एडवोकेट लाइफ को हेल्प करिवनी जो माने व्यूअर्स अछंती जो माने क्लाइंट पर्सपेक्टिव अछंती से माने भी any services एई सातटा जिंस निज एडवोकेट भीतर खोजंतु Right. सत एई सातटा जिंस निज एडवोकेट कि आपण जहा को आपण केस देइछंती ता भीतर एई सातटा जिंस खोजंतु लाइक फर्स्ट ऑनेस्टी खोजंतु सेकंड भीतर करेज अछि ना नै खोजंतु थर्ड देखंतु वेदर इज हार्ड वर्किंग ना सेमती खाली फेक करूची फोर्थ रे तारो विट और एलोक्वेंस अछि ना नै कि हाउ ही स्पीक्स द ऑडासिटी ही और सी हैज और नॉट जजमेंटल कैपेसिटी अछि ना नै आपण ठीक गाइड करि पारुची ना नै कोन आरो रिफ्लेक्शन आसीबो मोस्ट इंपोर्टेंटली हाउ ही ट्रीटेड हिमसेल्फ हाउ ही ट्रीट यू जोटा फेलोशिप हाउ ही ट्रीट अदर्स इन हिज मींस कलीग्स केमते ट्रीट करची एई सातटा जिंस आपण देखंतु डेफिनेटली आपण भीतर ट्रस्ट भी आसीबो आपण आउ लास्ट कथा कहबी यू रिमेंबर ऑलवेज you are average of the 5 people you spend the most time with, so choose your circle judiciously. Okay, with this note let us wind up this session. Hope we have added some values in your studies. If you have liked this session, please do like, share and subscribe to